Hey guys, hello and welcome all you dear students. A very warm and a wholehearted welcome to all of you present over here. I can see so many of you have joined us already. Welcome everybody. Today we are discussing a sample question paper from 3 respective schools. तो बच्चों आज का सेशन स्टार्ट करने के पहले ना I want to thank all of you. ठीक है, आई रियली वॉन्ट टू थैंक ऑल ऑफ यू. रीजन बीइंग बहुत सारे बच्चों ने मेरे साथ में अपना पेपर टेलीग्राम पे शेयर किया है. सो थैंक यू सो मच, ड्यू टू विच आई एम एबल टू ब्रिंग अप सो मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस दिस टाइम विच इज गोइंग टू बेनिफिट ऑल ऑफ यू. सो थैंक यू ऑल ऑफ यू हु ऑल हैव शेयर्ड द क्वेश्चन पेपर विथ मी. सेकेंडली, हु ऑल डू वी हैव इन आवर सेशन? जल्दी से बता दो मुझे चैट सेक्शन में. हाय सत्यम, हेलो अनुप्रिया, hello Vinutna, am I pronouncing your name correctly? Please let me know. So welcome everybody, welcome to Gradeup. This is your very own English faculty Prerna Sharma. I hope all of you are in the best of your spirits and all of you are doing well. So आपको आज का सेशन में आगे बढ़ने से पहले let me give you a quick introduction regarding Gradeup Super. So you can enroll with us. Yes guys, you have a chance of enrolling with us where we will get the chance of teaching you for the entire curriculum with complete doubt resolution, putting forth India's best faculties for you. You also have a chance of winning a green card that will enable you for attempting any online mock test which is designed by toppers, by the way, and are also based on the latest exam pattern. There is a little phone number given at the end of the screen. Please note that so that you can get in touch with us. And yes, this is very useful for all of you. मैं आप लोगों को बहुत बार ये चीज़ बोलती रहती हूँ, ठीक है, बट मुझे सच में इस बार ये चीज़ की इंपॉर्टेंस फील हुई है बिकॉज इतने सारे बच्चों ने अपना क्वेश्चन पेपर मेरे साथ में शेयर किया है. वी हैव अ क्वेश्चन पेपर टुडे फ्रॉम सेंट जेवियर्स. सो बच्चों आज हम जेवियर्स का भी पेपर डिस्कस करने वाले. नवोविद्या करके एक स्कूल है, उसका भी पेपर शेयर करने वाली हूँ मैं आप लोगों के साथ में. एंड देयर इज वन मोर स्कूल जिसका क्वेश्चन पेपर हम लोग डिस्कस करने वाले विच इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन रिवाइज्ड सीबीएसई गाइडलाइंस. ठीक है, अकॉर्डिंग टू रिवाइज सीबीएसई गाइडलाइंस ये पेपर आया है. सो यस, जल्दी से मुझे बता दीजिए कौन कौन बच्चे हमारे साथ में हैं. हाय हदिका, यू कैन सी द टेलीग्राम आईडी ऑन द स्क्रीन राइट नाउ. यू गाइज नीड नॉट डू एनीथिंग, जस्ट डाउनलोड कर लो टेलीग्राम, गो ऑन द सर्च आइकन, सर्च फॉर Prerna_English and you will get it. Yes, so this is our routine that we follow every time. अब मुझे आप बताओ कि ऐसा कौन सा पार्ट है आपके पेपर में विच यू फाइंड डिफिकल्ट, जिसके लिए आपको सबसे ज्यादा टाइम लगता है. यस, विच इज दैट पार्ट फ्रॉम योर पेपर जिसको सॉल्व करने के लिए यू रिक्वायर लॉट ऑफ टाइम. या यू रिक्वायर लॉट ऑफ टाइम एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम इट्स वेरी कंफ्यूजिंग ऑल्सो. ऐसा कौन सा पार्ट है आपके पेपर में बच्चों? जल्दी से बताओ मुझे क्विकली. Yes, which is that part in your paper which you find very difficult to solve? It takes lots of time, हाँ. Time taking कौन सा है? Yes, नवोविद्या विद्यालय. प्रिंस आपने ही शेयर किया था मेरे साथ वो पेपर हम आज डिस्कस करने वाले हैं प्रिंस. Yes, गाइज जल्दी बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में विच इज द पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन पेपर जो आप लोगों को ऐसा लगता है नहीं भाई ये बहुत टाइम ले लेता है सॉल्व करने के लिए. इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम. हाय अर्जिता, हाउ आर यू? गुड टू हैव यू. यस, गुड इवनिंग प्रिंस, करेक्ट आंसर. ठीक है, नाउ दिस पार्ट दैट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम वाइल सॉल्विंग, ठीक है, इज द अनसीन पैसेज. असिया, प्रिंस, सबने बराबर बात बोली है एकदम. इंडीड आई अग्री विथ यू, द पैसेज टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू आंसर. सो आई थॉट लेट्स गिव यू गाइज वन प्रैक्टिस अबाउट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ऑल्सो. वी हैव डिस्कस्ड स्टोरी, वी हैव डिस्कस्ड डायरी, वी हैव डिस्कस्ड आर्टिकल. ठीक है, वी हैव ऑल्सो डिस्कस अ कपल ऑफ मोर राइटिंग स्किल्स, बट आज आई थिंक वी शुड डिस्कस reading comprehension part because that is something which always takes a lot of time for everyone. Okay, so आज हम लोग डिस्कस करने वाले reading comprehension. This comprehension was asked in St. Xavier's. Okay, this comprehension was asked in St. Xavier's and
इसको I'll give you one more benefit of this. Okay, let's kill two birds with one stone. Read this passage as if it is a story, which it actually is also. इसको एक story की तरह से refer करके पढ़ोगे ना, so you'll also get an idea what flow you are supposed to follow when you're writing a story. How is the passage like? Night fell, the moon rose. Okay, see, this is how you can start. There's a different way you can start your story. Note this, guys. And generally I don't say this to you, but sometimes ऐसे कर लिया करो that when you're coming for the English session, bring a notepad and a pencil with you so that you can note. Now this is a very good way of starting a story. Come on, we have done this so many times. Once upon a time, on one day, there was this is generally how we start a story. But see, night fell and the moon rose, or it was a bright summer day and sun was shining in the sky. Yeah, if you start this story, indirectly we are trying to tell them that it is the night time, or indirectly we are trying to tell them that it is the daytime. Okay, these are also good ways, different ways of stating the time of the day. Okay, I know that some of you cannot see too many things. Just give me one moment. All right. Yes. So the night fell, the moon rose. Sher Singh could see bare tracks in the dust. He was dead tired and could walk no further without rest. He got his burden against a tree and gently laid down cover. As the two lay on the cliff above a riverbed, Sher Singh saw a hero of elephants. Just give me 1 second, guys. I think you guys cannot see. Saw a herd of elephants. It's not hero, it's herd of elephants. Herd is a collective now. Coming up Nulla. They were very near, but he was up above them. Suddenly, an old tusker. Can anybody tell me what is the meaning of tusker? Do you know what we exactly are talking about? Guys, what do you mean by a tusker? Who is a tusker? Yes, jaldi se batao mujhe chat section mein, all of you. What is the meaning of a tusker? Quickly, guys, jaldi. We don't have too much time. आज तो बहुत बड़ी menti quiz है. We have a big menti quiz of 18 questions. Since we are discussing more than one school का paper, so combine कर दिए मैंने सारे grammar questions. We have almost 18 questions to discuss today. Yes, guys, what is a tusker? I'm expecting answers from you. Yes, क्या है बेटा tusker? What do you think is a tusker? So yes, this is a representation of an elephant. Okay, this is a representation of an elephant which was moving his trunk to and fro. This is a representation of an elephant, and he was moving his trunk to and fro. To and fro is a phrase, guys. It's a phrase which tells us that it is going, it's, moving up and down. Its trunk is moving up and down. Came around towards the boys. Sher Singh was frightened and prayed earnestly. What do you think is the meaning of earnestly? I'm going to ask you this, all right? Meaning of earnestly is going to be the first question. See, these words are highlighted for a reason. Okay? They are already highlighted, highlighted in the passage itself. So you have to find out the meaning of this word. Prayed earnestly. What do you mean by prayed earnestly? Earnestly का क्या मतलब है यहाँ पे? ठीक है? Let me know in the chat section. Let me know in the comment section, all of you. Yes. I am trying to see all your answers, बच्चों. ठीक है? हाँ, अब मुझे भेजना. I will be able to see your answers. Yes.
खुशी saying earnestly का मतलब है seriously. चलो खुशी देखते हैं, let's find that out. Okay. Suddenly the Tusker trumpeted and hurriedly went away with the herd after him. He scrambled down the riverbed. What do you mean by scrambled, बच्चों? Hi Srishti, what do you mean by scrambled? Scrambled we associate with one type of food item, we can say. What do you mean by scrambled? किस फूड आइटम से रिलेट करते हैं हम लोग स्क्रैम्बल्ड को? बता सकते हो आप लोग? मुझे चैट सेक्शन में बताओ जल्दी से. Khushi, if you are having your exam on 19, then this is a very good exercise for you. See, we are practicing a comprehension. We've already done story. We've already done article. Tomorrow, I'm going to go all literature with you. All literature tomorrow. Extract based questions, MCQs, everything. इतने सारे बच्चों ने question papers share किए मेरे साथ में. सारे extract, सारे questions. Tomorrow, only Menti. We'll do only Menti tomorrow. Yes, so guys, scrambled generally is related with a food item called eggs. Scrambled eggs means egg ka bhurji. Okay, so what is the meaning of scrambled over here? Scrambled means crippled. Over here, scrambled means crippled, matlab kuchal ke chale jana. Okay, he scrambled down the riverbed. The river was broad but shallow. He stepped into the icy cold water and came out of the river and plodded steadily on. It was midnight when he reached the Severn River. The bridge over the river had submerged. Then an uprooted tree had rolled down a steep waterfall and hit the drowned bridge. The bridge was broken. Sher Singh could not swim through the flooded water and the load made it impossible. He decided to find his way among the wreck of the bridge. The boy then plaited some grass into a rope and tied around his brother and himself so they would keep together. He then entered the water just above the bridge. He moved towards despite obstacles. Obstacles? What is the meaning of obstacles? Can you guys let me know the meaning of obstacles? Freedom Fighters fan. बेटा क्या आपने आपका क्वेश्चन पेपर मेरे साथ शेयर किया है? Because I don't know your name, so it is very difficult for me to identify that. Have you shared your question paper with me? Which school do you belong to? I'm going to discuss everyone's question paper who all are going to share it with me on my Telegram ID. Anushka, then this is a very good exercise for you. If you have an exam tomorrow, तो ये तो बहुत बढ़िया बात है. Drishti, I think we are going to be discussing your question paper today. We are going to be discussing some questions from your question paper today. Grammar questions precisely. Yes, so obstacles का क्या मतलब है बच्चों? What do you mean by obstacles? Yes, what do you mean by obstacles, बच्चों? अरे, this is very easy, no? Obstacles, everybody can tell me. Yes, Kunti, correct answer. Obstacles का मतलब होता है problems. ठीक है? Problems associated with moving forward. So he moved forward despite all the problems, despite all the hurdles. आप इसको hurdles भी consider कर सकते हो. ठीक है? Feeling in the darkness of the things to hold. Finally, they crossed the river. People helped him into a bullock cart and then managed to board a truck which dropped him at the hospital. Sher Singh had no money, so in the morning he went down to the rail yards and got some work of loading coal. When the doctor called him, the boy was scared and expected the worst. But the doctor applauded his bravery and informed him that his brother was out of danger and he could see him. Okay? So this is an experience. Okay, this is an experience. This is something a person has gone through and they have narrated the entire incident. This is a narration of an incident.
You can take a reference from this incident if you are willing to write a story. But now what am I going to do? I'm going to ask you questions. So this we have already discussed. Earnestly का क्या मतलब है? Earnestly का मतलब है seriously, with complete heart. Scrambled means to cripple down something. ठीक है? To break down something in pieces, to break something in pieces. And obstacles means problems and hurdles. So this we have done. Okay. What could Sher Singh see in the dust at night? What did he see? Did he see tiger tracks? Did he see bear tracks? Or did he see car tracks? Come on, let me know in the chat section, all of you. Once again, I'd like to repeat, this paper is from St. Xavier's. St. Xavier's के पेपर में ये पैसेज आया हुआ है. Vithunta, I already have a mentee for your practice. ठीक है, for tomorrow's paper, attempt the entire mentee. It will be a good practice for you. Swaroop, for that you had to join early. The scenario is very big. The class is at 7. You have to join in time. Students ought to be punctual. Guys, did you go through the video? Did you go through the recent video I have put about modal verbs? Have you gone through that? Is it so, Arjita? Is it your paper? Yes, Arjita. So what is the answer for this one? So in the dust at night, what did Sher Singh see? Tiger tracks, car tracks, or bear tracks? Come on, quickly everyone. What's the answer for this one? Let me show you the passage once again. See. Tracks, tracks, tracks. Where can we see tracks? Some guys are giving me the answer. I'm trying to give you the point where exactly the answer is there. All right. See, here itself in the very first line. Could see bear tracks. ठीक है? Bear tracks, guys, directly given. So correct answer for this one is option B. Who all have answered option B? Okay, next one. अच्छा बच्चों, मैं आपको एक चीज रिक्वेस्ट कर सकती हूँ. Can I request you one thing? Instead of writing these things at the in the chat box कि मैम मेरा मंडे को पेपर है, या मैम मेरा ट्यूसडे को पेपर है, या मैम आप मेरा पेपर कब डिस्कस करोगे, लेट्स फोकस ऑन द क्वेश्चंस दैट वी आर डिस्कसिंग राइट नाउ, है ना. इट विल बी मोर बेनिफिशियल टू यू. I will give you time to ask your doubts, and you always can approach me on Telegram, right? Okay, let's move on towards the next question. What is referred as burden which Sher Singh placed against the tree? What did he place against the tree? Now I have just shown you the passage. क्या आंसर है इस क्वेश्चन का? जल्दी से बताओ मुझे चैट सेक्शन में. We have to move towards our mentee quiz also. So जल्दी क्विकली बता दो मुझे इसका क्या आंसर है. Yes, quickly all of you. Yes, Pavan, think about it. Pavan, give it a brief thought. थोड़ा सोच के बोलो. Yes, Arjita, correct answer. Yes, Anushka, correct answer. There's one more girl now who has exam tomorrow. Vinuthna, can I just call you Vinu? It's more easier for me. Yeah, Vinu, you must answer these questions. If you have paper tomorrow, then you must answer these questions. Yes, Pavan, correct answer. The answer is first option. His brother, the Kuwar, he placed him against the tree. Why did Sher Singh decide to work in the rail yard? At the end,
he decided to work in the rail yard. What was the reason for that? Why did he decide to work on the rail yard? What is the reason that he had decided to work on the rail yard? Yes, Satyam. Yes, Ayushi. Past time, you say? Okay, Anu. Yes, Prince ने correct answer दिया है. अनुष्का ने correct answer दिया है. अनुपम, थोड़ा सोचो अनुपम, your answer is not correct. Correct answer for this one is option B, because he did not have any money. Since he did not have any money, this is why he had to work. Yes, correct. Very good. चलो, अब next वाले में मैं कोई hint नहीं दे रही हूँ. How did Sher Singh tie his brother to himself? How did Sher Singh tie his brother to himself? कैसे tie किया? जल्दी से बताओ मुझे chat section में. Yes, come on, quickly all of you. Chat section. Yes, विनूतना, अरिजिता. अच्छा, एक और चीज करना guys ना, when you're answering, answer ऐसे करो, fourth और फिर उसका, so that I come to know that you're answering for this question. Quickly. All right. A rope made of glass या rope made of his waistband. कुछ बच्चे A बोल रहे हैं, कुछ बच्चे B बोल रहे हैं. मैं कैसे डिसाइड करूं क्या करेक्ट है? अच्छा, एक तरीका है हमारे पास डिसाइड करने का. I'll show you the answer. ठीक है, ये देखो ध्यान से, यहाँ पे देखो, पढ़ो इसको. The boy then plaited some grass into a rope and tied round his brother and himself so that they would keep together. You have to listen, guys. You have to listen. And you have to read when I'm telling you about comprehensions. I know with online and with you seeing something on the screen, it might be tad bit difficult for you to go through comprehension questions, but I'm expecting that kind of diligence from all of you because you all are that diligent, no? So correct answer क्या होगा इस question का? So correct answer for this question will be that he tied a rope made of grass. Option A. Last question. Last question from this passage for all of you. Anu, uske liye to you have to see the recorded session. Now, I can't just read it again for one student, no? And you have to join early also, Anu. 7 o'clock sharp every day. Don't miss the time. Yes. 2 vehicles Sher Singh used to reach the hospital. Bullock cart and bus, or bullock cart and a truck. Which one? A or B? Fifth one. Some people are saying A. Are you guys just guessing the answer? Arjita, which is the correct answer? So this is Arjita's paper, guys, and even Arjita is here with us. Let me show this answer to you again. ना तुम लोग सुनते नहीं हो ना passage, बेकार लोग, सुना करो. People helped him with a bullock cart and then he managed to board a truck. इतना easy. ये तो MCQ questions है. यहाँ पे you guys shouldn't be making a mistake and this is a very easy comprehension. इससे भी और ज़्यादा tough comprehensions आते हैं यहाँ. बहुत ही easy comprehension है. Correct answer for this one is option B. All right. Okay. Now this question, guys, very quickly we're going to be discussing this. This is from Navodaya Vidyalay Samiti. Okay. Do we have Prince? Is this from your school? Prince, please let me know if this is from your school. Okay. Do we have the student who has shared this paper with me? Yes. So guys, this is from Prince's school. Prince is here with us in the comment section. He's replying also. The name of his school is Navodaya Vidyalay Samiti and his school has followed the proper pattern that is given out by CBSE. Okay.
Now this was one of the writing skill question. Writing skills was asked for 10 marks. You have to attempt one of these. देखो क्या पूछा है यहाँ पे. You are going to a school picnic with your classmates and teachers. You are very excited. The night before the trip, you sit down to write your diary. Diary entry का एक question दिया है. ओके 5 मार्क्स के लिए लिमिट वही है 100 to 120 वर्ड्स. कैसे स्टार्ट करेंगे हम लोग? वी विल राइट द टाइम, वी विल राइट द डेट, we will write the day, dear diary, and then we can start. Here you can make use of lots of idioms that show happiness. Use over the moon, use on the ninth cloud. You can use I can see anything related to excitement. Yeah, anything related to excitement. You can use words like happy, excited, elated, ecstatic. Yeah, we can make use of lots of good vocabulary also over here. Second one now. Last summer vacation, you visited your friend's village. His grandmother looked after you as if you were her grandchild. Describe her in 100 to 120 words. Now बच्चों ये एक ना नए किस्म का question है. It's called a descriptive paragraph where you will probably be asked to describe some person. ठीक है, आपको कभी ना किसी को डिस्क्राइब करने के लिए बोला जाएगा. अनु ऑल्सो इज हियर फ्रॉम द सेम स्कूल. अनु, सो ग्लैड टू हैव यू ऑल्सो ओवर हियर. इज दिस योर पेपर? डिड यू गेट दिस क्वेश्चन? विच वन डिड यू अटेम्प्ट? Yes, Arjita, I know, but since that passage from your paper was very nice, I had to take it. And since you shared your paper with us, so हमने तो लेना ही है आपका पेपर, है ना? So these questions that we are doing right now is from नवोदय विद्यालय समिति. इसी पेपर के हम लोग ग्रामर क्वेश्चंस भी करने वाले हैं. ठीक है, बी प्रिपेयर्ड. और एक और स्कूल के ग्रामर क्वेश्चंस हम करेंगे. देयर इज दिस वन चाइल्ड हु हैज शेयर्ड हिज पेपर विथ मी, बट ही डिड नॉट मेंशन हिज स्कूल. ओके, यस. So last summer you visited your friend's village. Here you are supposed to describe his grandmother. You have to mention, okay, don't extend this question beyond 3 paragraphs. ठीक है, 3 paragraphs से ज़्यादा इसको extend मत करना. You can write about how she treated you. You can write about how she appeared, how she looked. ठीक है, you can write about any of the incident that you in a couple of lines only. Say you can write, so I was feeling a little homesick. She sensed it looking at me, and then she came and sat with me, spoke with me for a while. She was sitting around me unless and until I didn't go to sleep. You know, you can mention things like these, and obviously don't forget to make it vocabulary rich, everyone. Acha, now are you all ready for the Menti session? तो मेंटी होगी इसके तुरंत बाद. तो नवोदय विद्यालय समिति में एक क्वेश्चन और पूछा गया था फॉर राइटिंग स्किल्स, एंड दैट इज अबाउट स्टोरी. आई रियली फील दैट दीज 2 टॉपिक्स आर वेरी नाइस. Why don't you guys write a story on these topics and share with me on Telegram? This is a homework for all of you. Please make the note of it. This is a homework question for all of you. Please make a note of it. You can definitely write a story on any of the topics and share with me on Telegram. If your story is good enough, I'm going to be taking it in my session. I will discuss it in the class. Don't forget, tomorrow we have the last session of this series of this special series where I am discussing question papers. तो अगर अभी तक you guys have not shared your question papers with me, तो जल्दी करो. अभी कल का आखिरी है इस पे. ठीक है, tomorrow is the last session in this series. Whole question paper in the Telegram group. Yes, Asif, I'm going to do that. आज मैं Telegram group में 3 question papers share करूंगी. I will do that for sure. Yes, guys. So now I think we can move towards our Menti quiz. क्या बोलते हो? Menti करनी है क्या? Shall we move towards our Menti quiz? So without any further delay, here we go. And let's start your Menti quiz. This is the code for you. 57778265. आ जाओ. जल्दी जल्दी सारे बच्चे, क्विकली सारे ही बच्चे आ जाओ. लेट्स डू दिस.
Satyam, पहली बात तो your sentence is grammatically incorrect. Okay, whom are you talking about? Your school people are definitely going to be correcting all your papers. If you're sending me your question paper, if you're sending your writing piece to me, of course I will correct it and I will let you know. ठीक है, सेंडेड कोई वर्ड नहीं होता है सत्यम, ये गलती नहीं कर सकते हम. कैन आई शेयर माई पेपर टुमारो आफ्टर 2 प्लीज? येस ऑफ कोर्स, प्लीज डू दैट अनुष्का, टेक योर टाइम, जब भी हो सके तभी शेयर करना. Yes, Anushka, okay. What is the code? Anu, code is on your screen. 57778265. Very easy peasy. जल्दी से आ जाओ सारे बच्चे. आज की होने वाली बहुत बढ़िया क्विज, क्योंकि स्कूल के क्वेश्चंस उठाए मैंने. These questions are not mine, so they are very easy. ठीक है, जल्दी जल्दी से बता दो कौन कौन है बच्चे. जल्दी जल्दी सारे बच्चे आ जाओ. अरे सागर, बड़े देर बाद में आए हो तुम. Where were you all this while? Okay, Sagar, so good to know that you are having your exams. I hope you're doing good in all your exams. और सबसे बेस्ट आप इंग्लिश में करोगे, ऐसी मैं होप करके चल रही हूँ. I am hoping that. Yes, thank you so much, Soumya Shri. And you know, guys, I always do this. I put the code in my Telegram group also, ताकि जो भी बच्चे आना चाहें वो आ सकते हैं. 18 questions है, बहुत ही फास्ट में चलेंगे हम लोग आज. ठीक है, 57778265, 8 2 6 and 5. आ जाओ, जल्दी आ जाओ सारे बच्चे, क्विकली आ जाओ. Once again, I'd like to request all of you, if in case you have not shared your question paper with me, please do that. Tomorrow we have our last session in this series. उसके बाद में मैं और एक different series चलाने वाली हूँ. It's called, okay, let me not tell you about that. Let's keep it a little bit of surprise. आ जाओ सारे बच्चे, जल्दी जल्दी से आ जाओ, quickly come and let me know. So, are we all here? Shall we start? Start करें? I think we should, right? और वेट नहीं करते हैं. Let's begin our quiz. अच्छा guys, देखो ये एक नए किस्म का क्वेश्चन है. This is a new kind of question. Okay? According to revised CBSE guidelines, 3 marks are completely dedicated to reported speech. They will ask you reported speech in 2 different ways. This is one of it. ठीक है, आई थिंक ये हम लोग नवोदय विद्यालय से तो नहीं है. ये स्कूल का नाम मुझे नहीं पता है. बच्चे ने पेपर मेरे साथ शेयर किया, बट ही डिड नॉट टेल मी द नेम ऑफ ए स्कूल. ठीक है, सो दिस इज अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन 2 पीपल. ये कॉन्वर्सेशन के हिसाब से यू हैव टू सब्स्टिट्यूट. हेलो मामा मैम, सो स्वीट ऑफ यू. हाय, हाउ आर यू? So yes, correct answer for this one is option C. देखो, I'll give you a quick explanation about this. बहुत जल्दी से wind up करेंगे इसको. When already you have something in past tense in the direct speech, you will change it into past perfect tense. ठीक है, the conversation that we had, it had something in past tense, तो हम लोगों ने उसको change कर दिया past perfect में. देखते कितने बच्चे लीडर बोर्ड पे मचा पाए हैं इसके बाद में. Okay, Shaurya Mohanty in the house. Sagar is also back. Purva, Suavit, hello everyone, welcome. और हमारे साथ में बहुत अच्छी बात तो ये है कि उमामा मैम भी है. उमामा मैम बोल रही है कि उनको मुझसे पढ़ना है. उमामा मैम, इट इज गोइंग टू बी अ गिव एंड टेक रिलेशनशिप. यू टीच मी फिजिक्स, आई टीच यू इंग्लिश. क्या बोलते हो? वैसे हम लोग मेंटी वॉर्स करके देख चुके हैं और हम लोगों को बहुत क्लियरली पता है कि एवरीवन इज गुड इन देयर सब्जेक्ट्स and other subjects also. Okay, उमा मैम. नहीं, हाँ बिल्कुल, मैं बिल्कुल नलायक बन जाऊंगी मैम. I'll definitely become your nalayak. So guys, isn't it always fun when all we teachers, we come together to give you something different.
या वुड यू वांट समथिंग लाइक दैट? अगर आप लोगों को कुछ ऐसा चाहिए कि भाई नहीं हम लोग सब साथ में आए, तो रिक्वेस्ट करो, मामा मैम यही है. नाउ यू कैन टॉक टू हर, नाउ यू कैन रिक्वेस्ट हर. The second question, the one that you have just answered, is all again based on reported speech. मुझे बहुत सारा वेरिएशन देखने के लिए मिल रहा है जो कि नहीं मिलना चाहिए. गाइज देखो, बहुत सिंपल सा रूल है वर्ब्स के मामले में. इफ देयर इज एनीथिंग इन प्रेजेंट टेंस यू चेंज इट टू पास्ट टेंस. इफ देयर इज एनीथिंग इन पास्ट टेंस यू चेंज इट टू पास्ट परफेक्ट टेंस. इट्स वेरी सिंपल, वेरी इजी. Only 4 people have got it right. Let's see how the leaderboard looks like. अरे बच्चों, ये मैम आजकल ये लोग डिसलाइक पे चल रहे हैं. ये लोग आजकल लाइक नहीं करते हैं, आजकल ये लोग डिसलाइक करते हैं. गाइज इफ इन केस यू हैवंट लाइक द सेशन येट, तो जल्दी से लाइक कर दो. एंड हियर वेरी क्विकली वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन. थर्ड क्वेश्चन कमिंग राइट अप. जानवी कोई बात नहीं, वी आर डन विथ ओनली 3 क्वेश्चंस येट. जल्दी से आ जाओ, ज्वाइन कर लो 57778265 एंड ज्वाइन इन द मेंटी क्विज. हाँ मैम, बिल्कुल बिल्कुल वही हो गए हैं. एकदम सही बोला, एकदम सही बोला. हाय अनुप्रिया, मैं आपको एक बार वापस से हाय बोल रही हूँ. रजनी लिख रही है मैम वन मोर मेंटी वॉर. सागर डिसलाइक था या लाइक था? थोड़ा सोच के बताना मुझको एक बार. Yes, so third blank you're supposed to fill, after which we're going to be moving on towards different kind of questions. तो जल्दी जल्दी आंसर करो everybody. Everyone has almost replied and let's have a look at the leaderboard real quickly. दृष्टि आ गई है लीडर बोर्ड पे, शौर्य नीचे चला गया है. शौर्य शायद आंसर नहीं कर पा रहा है, कुछ तो प्रॉब्लम है. अब सागर आ जाएगा फर्स्ट पे. वेरी गुड सागर. यस, कल एग्जाम में मचाएगा, बिल्कुल मचाएगा, डेफिनेटली मचाएगा. नाउ व्हाट यू गाइज हैव टू डू, there are 6 sentences you have to fill appropriately in the blank. सब combined है यहाँ. modal verbs है, articles है, verbs है, tenses है. ठीक है, जल्दी से quickly. क्यों जानवी आज क्यों मेंटी नहीं कर पाओगे? रजनी क्या हो गया? Yes, so I have been to blank doctor whose name appeared blank New York Times. How will you answer this one? बहुत जल्दी जल्दी सारे बच्चे आंसर कर रहे हैं. Yes, उमामा मैम, what do you think will be the answer for this question? चलो देखते हैं उमामा मैम क्या आंसर करती है. हाँ उमामा मैम, क्या लगता है आपको क्या आंसर होगा इसका? गाइज वंस अगेन I'd like to request all of you, if in case अभी तक तुम्हारे स्कूल में पेपर जो हुआ है वो तुमने शेयर नहीं किया, तो जल्दी से कर दो. और मीनवाइल आप लोग सबने करेक्ट आंसर भी दे ही दिया है. यस, सत्यम, साकेत, पूर्वा, सुआवित, शौर्य. शौर्य वापस आ गया, वेरी गुड. अर्जिता, दृष्टि, अनुप्रिया. अच्छा ये भी मुझे बताना कि whose paper is this question from? I know that there are some students who are already there with us. उनके स्कूल का ही ये questions चल रहे हैं. If there is anybody, तो please let me know in the chat section. I like physics वाली मैम very very much, very very much. Correct answer for this question is option C. Let me give you a quick explanation about that. Whenever you are doing something that is progressive, doing something that is temporary, we take present continuous tense for that. Therefore, we are planning. We are planning is correct. और leaderboard ने सभी ने correct answer किया. This is nice. Great. Let's have a look at the next question. I know I'm pacing up a little bit क्योंकि करना भी पड़ेगा ना. 18 questions है हम लोगों के पास में. Lots of questions coming up for you. जल्दी से. So yippee, I blank for the school dance competition. क्या हो सकता है? Present tense, past tense, future tense. What are we going to fill over here? मैम waffles और वो स्पेशल जगह के waffles जहाँ हमने खाए थे मैम, याद हो अगर आपको. I think I regretted not having them. Yes, waffles. Totally. मैम सागर देखो क्या बोल रहे हैं. हाँ सब बिल्कुल, all of us, even my children, even all my students.
करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी एंड लॉट्स ऑफ यू हैव गिवन करेक्ट आंसर्स आल्सो. जल्दी से देख लेते कि लीडर बोर्ड पे किस किसने अच्छे से किया है. अनुप्रिया गलत हो गया ये वाला. Let me know, Anupriya, if you haven't understood this one. I'd like to help you out with that. Next question coming up on your screen. 7th question, all of you. Be a little quick while answering this. We have almost 10 more questions to go. Why don't you blank it with a hammer? Now, अच्छा ये question ना बच्चों, it's a combination of finite and non-finite verbs. Okay? Gerund, infinitive. which word are you supposed to substitute? gerund substitute करना है, infinitive substitute करना है, इस पे डिपेंड करता है ये क्वेश्चन. ठीक है, जल्दी से बताओ मुझे. एंड क्या बोल रहे बच्चों को बताना जीटी. अरे हाँ बच्चों, GNST का रिजल्ट आ गया है. डिड यू गाइस चेक दिस? भाई स्टेज 1 का रिजल्ट आ गया है. बिल्कुल मुझे बताओ सारे बच्चों क्या क्या रिजल्ट आया आप लोगों का. भी इंग्लिश तो होती नहीं GNST में, नेक्स्ट टाइम से इंग्लिश भी इंक्लूड करेंगे. और मुझे जल्दी से बताओ आप लोगों का क्या रिजल्ट रहा है. लेट्स हैव अ लुक एट द लीडर बोर्ड. कम वेरिएशन दिस टाइम, सो आई एम होपिंग ऑल ऑफ यू नो द आंसर फॉर दिस वन. लेकिन इसमें लीडर बोर्ड में किसने किसने मचाया है. सागर ये गलत हो गया क्या? बट सागर मुझे लगता है कि फिर भी ही हैज आंसर्ड लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस करेक्टली, तो ही इज गोइंग टू मेक हिज पोजीशन. वो हलाने वाला अपना पोजीशन. यस गाइज, रिजल्ट आ गया है. रिजल्ट आ गया है GNST के फर्स्ट स्टेज का. यस, सो मैथमेटिक्स की बात कर लेते हैं. यू गाइज ऑलरेडी नो द लव दैट एग्जिस्ट बिटवीन फिजिक्स एंड इंग्लिश. तो मैथमेटिक्स के भी बारे में बात कर लेते हैं. इट इज मैथमेटिक्स को क्या बोलोगे आप? प्रेजेंट टेंस में बोलोगे, फ्यूचर टेंस में बोलोगे, या पास्ट टेंस में बोलोगे? Fill up this one. I think 40 seconds is too much for this kind of question. Very easy. Okay, that's so nice to know that you have. And next question coming up. जल्दी से आंसर कर दो. टाइम के पहले 10 सेकेंड पहले आंसर कर दिया सब बच्चों ने. लेट्स हैव अ लुक एट द लीडर बोर्ड. बहुत सारे बच्चों ने करेक्टली भी आंसर किया है. सो आई एम होपिंग लीडर बोर्ड पे सारे ही बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया होगा. And I am right. Let's have a look at the next question. I know I'm hastening this a little bit, but बनता है बच्चों, हमारे पास में और 9 questions है appear करने के लिए. Yes, तो थोड़ा सा fast है ना, थोड़ा सा fast. This is the best movie I have blank. How will you cover this up? अच्छा, मैं ये भी बता दूं आप लोगों को guys, this question is based on adverbs. ठीक है, अब आप लोग बोलोगे कि मैम एडवर्ब्स तो हम लोगों को है नहीं एक्सप्लिसिटली 9th में मेंशन किया हुआ. सो 9th स्टैंडर्ड के ग्रामर में देयर इज गोइंग टू बी एवरीथिंग दैट यू हैव स्टडीड टिल नाउ. ठीक है, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी टेस्टेड. बी इट पार्ट्स ऑफ स्पीच, बी इट फिगर्स ऑफ स्पीच, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी टेस्टेड. ऑलराइट, बहुत सारे बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया है. कांटे का कॉम्पिटिशन है. अनुप्रिया बीइंग द फास्टेस्ट, वेरी वेल डन. 10th क्वेश्चन कमिंग अप ऑन योर स्क्रीन्स. ऑल द बेस्ट एवरीबडी. Congratulations everyone who has passed stage 1. For this question, once again, there is a conversation given to you. This is from Navodaya Vidyalaya. ठीक है, नवोदय विद्यालय के क्वेश्चंस हैं ये अब जो फॉलो होंगे. सो आई हैव कंबाइंड 2 क्वेश्चन पेपर. CBSE के 2 क्वेश्चन पेपर कंबाइन करके आज की मेंटी क्विज बनाई है. अभी तक जो क्वेश्चंस आप लोग कर रहे थे, दे वर फ्रॉम अ स्पेसिफिक क्वेश्चन पेपर. नाउ दीज वंस आर फ्रॉम अ डिफरेंट क्वेश्चन पेपर. दिस इज फ्रॉम नवोदय विद्यालय. यस सुहावित, बिल्कुल पढ़ाई पे फोकस करना है, फालतू की बातों पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना है. एंड यस, उमा मैम इज आस्किंग हाउ यू आर डूइंग. कौन बच्चे हैं वो जिनका फर्स्ट स्टेज क्लियर हुआ है, मुझे बताना जरा चैट सेक्शन में. मुझे भी तो पता चले विच आर द टॉप स्कॉलर्स दैट वी हैव. किस किस बच्चे का क्लियर हुआ है फर्स्ट स्टेज. बाकी जेरी, साकेत, वंशिका, अर्जिता, पूर्वा, अनुप्रिया, आसिफ, शौर्य, सागर तो है ही लीडर बोर्ड पे. बट ऐसे कौन बच्चे जिनका GNST का फर्स्ट स्टेज क्लियर हुआ है, जल्दी से बताओ मुझे चैट सेक्शन में. हाँ बिल्कुल करूंगी आसिफ, डेफिनेटली. आज आफ्टर द सेशन आई विल बी शेयरिंग 3 क्वेश्चन पेपर्स इन माय टेलीग्राम ग्रुप. ठीक है, तो अभी तक जिन जिन बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया है जल्दी जल्दी से ज्वाइन कर लो. एक चीज नोटिस करना सारे बच्चे, सी व्हेनेवर दे विल बी आस्किंग यू क्वेश्चंस ऑन रिपोर्टेड स्पीच ना, आपको 3 ही ब्लैंक्स आंसर करने हैं. ठीक है, देयर आर 3 ब्लैंक्स दैट यू विल हैव टू आंसर. सो 3 मार्क्स आर स्पेसिफिकली
डेडिकेटेड टू रिपोर्टेड स्पीच. 3 मार्क जो है वो स्पेसिफिकली हम लोग रिपोर्टेड स्पीच को ही डेडिकेट कर चुके हैं अकॉर्डिंग टू रिवाइज्ड सीबीएसई गाइडलाइंस. ओके, यस, इस बारी गड़बड़ नहीं करी है बच्चों ने. फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन विल चेंज टू थर्ड पर्सन प्रोनाउन, विच इज वाई ऑप्शन सी इज करेक्ट. लेट्स हैव अ लुक एट द लीडर बोर्ड. ऑल्सो मुझे बच्चों ये भी बताना कि आप लोग आपके एग्जाम में कैसा परफॉर्म करते हो. उप्स, सागर गलत हो गया क्या? शौर्य आ गया है अभी फर्स्ट पोजीशन पे. अब वो छोड़ेगा नहीं है पोजीशन, आई एम श्योर छोड़ेगा ही नहीं है बच्चा पोजीशन. 12th क्वेश्चन कमिंग अप, ऑल ऑफ यू, ऑल द वेरी बेस्ट, डू वेल. हाय फ्रीडम फाइटर्स, बेटा पहले भी आए थे. डू लेट मी नो योर क्वेश्चन पेपर, है ना. I'd love to discuss yours also. Okay, all right. अच्छा, कोई है नहीं बच्चा हमारे पास ऐसा जिसका JNST फर्स्ट स्टेज क्लियर हुआ है? यार ये वाला क्वेश्चन तो आप लोगों ने 15 सेकेंड्स पहले आंसर कर दिया है. करेक्ट आंसर भी दिया है बहुत सारे बच्चों ने. लेट्स हैव अ लुक एट द लीडर बोर्ड क्विकली. Yes, so Arjita, Saket, Vanshika, Virat, Jerry, Purva, Anupriya, Sagar, Asif and Shaurya making it big on the leaderboard. 13th question for all of you, including this last 6 questions of the quiz. Now all these 6 questions are going to be fill in the blanks. Work hard lest you blank fail. Will, should, may, must. Lest is a special kind of connector, everyone. Lest is a special kind of connector which will always follow a word. Which word? Yes, it will always follow should. ये आप लोगों को नहीं पता होगा, ये ट्रिकी क्वेश्चन है और ये नवोदय विद्यालय समिति का ही पेपर है. ये मुझे याद भी आ गया अच्छी तरीके से. करेक्ट आंसर फॉर दिस वन इज शुड. लेस्ट ऐसे करो, नहीं तो ऐसे हो जाएगा. दिस इज द उसका ट्रांसलेशन. ओनली शौर्य इज करेक्ट ऑन दिस. ठीक है, लेस्ट के बाद हमेशा शुड यूज होता है, ये याद रखना आप लोग. नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन मोडाल वर्ब्स. ठीक है, मोडाल वर्ब्स पे आई हैव रिसेंटली मेड अ वीडियो. आई विल शेयर द लिंक ऑफ द वीडियो इन माय, आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड इट इन माय टेलीग्राम ग्रुप. ठीक है, वो 1 मिनट के वीडियो भी अगर आप देख लोगे ना तो यू विल बी एबल टू आंसर दिस वन करेक्ट. वो 1 मिनट का वीडियो देखना है बस आपको एंड यू विल बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन करेक्टली. Correct answer for this one is ought to. So whenever we are talking about moral responsibilities, बच्चों, moral responsibilities में we will make use of ought. There is a timeline. Should से ज़्यादा emphasis ought to से ज़्यादा emphasis must. Let's have a look at the next question, which is again going to be a model verb question. आदित्य, फिर तो बड़ी देर कर दिया आपने ज्वाइन करने में. We have discussed everything. We have discussed almost everything from your paper. Anushka, you increase the level of you answering quickly and correctly rather than blaming anybody else. ठीक है, अपना लेवल बढ़ाना है. ठीक है, अपने पढ़ाई पे फोकस करना है. You should not pull down anybody. You work hard. That's more important. आप आपका पेपर शेयर तो करो. फ्रीडम फाइटर्स फैन, मैं आपको पहले भी पूछ चुकी हूँ. व्हाट्स योर नेम, व्हाट्स योर स्कूल, हैव यू ऑलरेडी शेयर्ड योर पेपर विथ मी? लेट मी नो दैट फर्स्ट. यस, सो चिल्ड्रेन शुड अवॉइड ईटिंग जंक फूड. ये ड्यूटी है. वेन एवर वी आर यूजिंग एनीथिंग फॉर ड्यूटी वी विल बी यूजिंग शुड. सागर, दैट्स वेरी इम्प्रोवाइजिंग ऑफ यू. क्या बात है सागर, वेरी गुड. आई एम वेरी इम्प्रेस्ड. क्या बात है, वेरी नाइस, गुड. सागर, यू शुड फोकस ऑन योर प्रोग्रेस, योर ओन प्रोग्रेस. वेरी नाइस सागर, वेरी वेल डन. आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू. गुड इम्प्रूवमेंट, गुड चेंज. लास्ट 2 क्वेश्चंस बचे हैं बच्चों. 3 क्वेश्चंस, 16, 17, 18. जल्दी जल्दी आंसर करना है. What's your name, bacha? Tell me your name. There are so many students who have shared their paper with me. I need to know your name, my dear. Okay, Asif, can you ask this question to me on Telegram? Let's discuss over it. They were having breakfast when the light went off. Very, very originally tenses based question. When an activity is going on and it is obstructed by any other activity.
ठीक है, ऑनगोइंग एक्टिविटी के लिए वी विल बी यूजिंग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. ओके निधि, विल डू योर पेपर टुमारो. ठीक है, कल करते हैं पक्का आपका पेपर. ओके लूसिफर, विल डू दैट. यस, न्यूज 60 वर्ल्ड, please let me know your name, my dear. And yes, your answer is correct. Next question coming up on your screens. All the best, everyone. Last 2 questions remaining. This is going to decide your position on the leaderboard. So Reema blank her aunt yesterday. Yesterday, huh? We're talking about yesterday. Okay, Shami, I'll try to remember that. All right, Lucifer, we'll do that also. Visited is correct. Had visited नहीं होता बेटा. एक चीज याद रखो कभी भी, we will be using past perfect tense only when there are 2 activities taking place, out of which 1 activity is done first. ठीक है, correct answer for this one is visited. Don't go on the concept of just sounding correct. You must know the cases जब हम लोग कौन सी चीजें यूज कर रहे हैं. ठीक है, रूल्स जैसे हम लोग मैथ्स में रूल्स फॉलो करते हैं उसी तरह ग्रामर में भी रूल्स है. लास्ट क्वेश्चन कमिंग अप ऑन योर स्क्रीन एवरीवन. पारुल ब्लैंक टीवी फॉर 3 hours. अगेन प्योरली टेंसेस बेस्ड क्वेश्चन, अ प्योरली टेंसेस बेस्ड क्वेश्चन. यस यस आसिफ, इसका आंसर बताओ. Yes, of course I can discuss. Aditya, please do share your question paper with me and I'll discuss the question paper with you. Which group should I join? And ma'am, would you mind sharing English exam? Of course I'm going to be doing that, Ayushi. Right after this class today, I'm going to be sharing 3 question papers. And you should be joining group which is called Prerna_English. Download karo Telegram, go on the search icon, join Prerna_English and I will share question papers over there. लास्ट क्वेश्चन के बाद अब हम लोग देखने वाले हैं रिजल्ट्स. तो रिजल्ट्स के हिसाब से क्या हो रहा है बच्चों, व्हाट्स हैपनिंग अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट्स. एंड वी कैन सी दैट इवन दो शौर्य डिड नॉट आंसर लास्ट क्वेश्चन करेक्टली, बट सिंस ही आंसर्ड मेनी क्वेश्चन करेक्टली, ही मेड इट टू द टॉप ऑफ द लीडर बोर्ड. कॉन्ग्रेचुलेशंस शौर्य. I can see the efforts taken by Asif, Jerry was the fastest also, Vanshika, Purva, then Anupriya, Shagar, Arjita, all of you, very well done. I mean, I am super proud all of you. I hope all of you are prepared for your exams now. ठीक है, now what we're going to do is, if in case you have not appeared for your exam or if in case you just want to practice, solve करो ये story, send it to me on Telegram. ठीक है, ये story solve करो, ये आप लोगों का homework है आज का. एंड साथ ही साथ में GNST के साथ में यू गाइज हैव अ चांस ऑफ विनिंग लॉट्स ऑफ स्कॉलरशिप्स एंड द रिजल्ट फॉर द फर्स्ट स्टेज इज आउट. दिस इज माय टेलीग्राम ID गाइज. डाउनलोड करो टेलीग्राम, गो ऑन द सर्च आइकन, सर्च फॉर Prerna_English and you'll find the group. Thank you so much all of you for attending this session. I hope it was fun for you. I hope you enjoyed the Menti quiz. I hope you had fun while we discussed the questions. Questions थोड़े easy है, थोड़े different हो गए हैं अभी according to revised CBSE guidelines. Now, if there's anything that you'd like to ask, anything that you'd like to mention, please let me know in the comment section. Quiz अब होगी कल, tomorrow 7 o'clock. ये मेरा time है for this entire month. Every day 7 o'clock in the evening I'm going to be here with you where we will be doing a lot of things regarding English. ठीक है, तो ये मेरा टाइम है. आप बताओ, if in case you need anything, if in case you want help with anything, please let me know. अच्छा, एक छोटा सा वीडियो है बच्चों, ठीक है, जो मैंने मोडाल वर्ब्स पे बनाया है. हैव यू गाइज सीन दैट? क्या आप लोगों ने वो वीडियो देखा है? इफ यू वुड हैव सीन दैट वीडियो ना, देन आपको आज के 2 क्वेश्चंस बहुत इजीली बन जाते हैं, वेरी इजीली. आई एम ड्रॉपिंग द लिंक फॉर दैट वीडियो इन द चैट सेक्शन इफ पॉसिबल. Hi Viraj, I'm so happy that you finished 6th standard, but you can definitely stick around over here with us. Lots of things we can do.
Guys, have you liked the session yet? I can see so many of you have not liked the session. Jaldi jaldi badhao likes sare. And you can see I've just dropped a link in the chat section for all of you. Just go through this video. It's on modal verbs and it will give you a good clarity about 3 modal verbs very properly. Anything else you want to ask? Anything you'd like to let me know? Anything you need help with? Please let me know in the comment section. You can always get in touch with me on Telegram also and let me know what you need help with. Yes. So guys, this is pretty much it from my side. I hope all of you enjoyed our session for today. It was real fun conducting it for you. It is a little long class, I understand. Thank you so much everybody for tuning in with us. I shall see you once again tomorrow in the last day of our series. So tune in with me tomorrow once again at 7 in the evening, where we will be discussing some more question papers and some more grammar questions also. Thank you so much all of you. That's my time. Goodbye.